Okay, a very good evening, everyone. This is Megha Upadhyay with my co-host Lalita, and we welcome on day 6 of Investment Pathshala 2023. Today, our speaker will explain to us about types of investors, effective methods to find and approach them. We have our very best speaker and mentor with us, Mr. Sivesh Kumar, founder and CEO of Startup Monarch and founding partner of O2 VC Funds. A very warm welcome to you, sir. And Thank in you. this session, yeah, Thank you, in this Megha. session, yeah, thank you, sir. In this session, we will be focusing on the what exactly is an investors. Now, sir will explain in details about this. Sir, the stage is over to you. Okay. Thank you. Okay. Uh, so let's start with the presentation. I will see that. Uh, so this is the slide that which I use in um, every presentation. If you can't explain it to 6-year-old, you probably don't understand it yourself. So when it comes to startup ecosystem, when it comes to fundraising or the funding ecosystem, investment ecosystem, uh, this is my personal view. Nobody knows anything because in startup ecosystem, in funding environment, everything changes into 6 months time. So if we are telling that okay, I can predict that this startup is going to do good or this startup is going to get funded, we are just taking intellectual guesses or intelligent guesses, considering taking in account the historical data that we have with us. So funding is never 100%. That's for sure. So even if you sign the term sheet, or even if you get a commitment on mail from the investors and VC firm, it is not 100% until you the money is transferred into the account. So this is why I try to create the entire presentation in a manner so that even a 6-year-old can understand ki uh, what is funding exactly into startups. Because until and unless you will understand कि funding होता क्या है, you won't be able to understand कि how to reach out to investors. So this will be the entire theme of the presentation. How I am going to take. I will try to end it in 45 minutes and 15 minutes we can have Q&A. So this will be the structure of the entire presentation. And in the meanwhile, if you think that there is some question which is popping into your mind, I think Megha and Lalita might be having some Q&A mechanism where you can ask the questions. So we can take it at the end of the session. And don't shy away from asking the questions, because the worst question is always the question which was never asked. So and nobody is judging you here. हम लोग सारे बेवकूफ हैं यहाँ पे in startup ecosystem. So go ahead and ask the question whatever comes into your mind. Even if you want to understand कि sir angel investor network का क्या meaning होता है, कैसे वो पैसा कमाते हैं, just go ahead and ask. I am here to answer with all my knowledge and experience of a decade that I have into startup ecosystem. So let's start. Today's presentation basic definition, because I am quite specific about what is the definition of like funding or VC firm or angel investors, what is bootstrapping, what is 3Fs and all. So you need to understand the basic definition. You will only move ahead when you have your basics clear. So this is really important. So we'll have some basic definitions, then sources of funds from where you can generate funding, types of investors, document required for fundraising, because when we talk about reaching out to investors into the right manner, at that point documents come into play. So we need to understand what are the documents which is required for the fundraising, then the effective methods to reach out to the approach the investors. So these will be like the you can say body of the entire presentation. Okay, this is me, I think. Let me skip it. So basically, I am founder of Startup Monk, and we have recently started with a VC fund. We will be acting in the cohort manner. We are launching the media launch is on 16th of January. It is O2 VC fund. So any startup which is going to get selected under our cohort, they will be getting upfront fund on day zero, and then there will be demo day. We are working into deep tech, completely deep tech space. So we recently founded it with a fund size of almost like $15 million. That is something which I am quite busy these days. So okay, so
you might today, I think it is the uh, seventh presentation day for the entire investment, but still I will just I will take you back to the what is the basic definition of funding. Yeah. Fundraising is largely generating funds for your venture either by selling your product and services and processes to the customer or selling your company's equity. So you need to understand this clearly. Funding can be done into both manners. Either you can sell your product to the customer and bring in the money. जो cash flow का concept होता है जिससे भी a lot of companies are doing good. uh, for the last 2 days, Jiroda is into the news all across. They have made a profit, net profit of almost like 2045 crores, something like that. जितने भी startups present out there at present, जितने भी unicorns हैं, उनका collective profit उतना नहीं होगा. They are all into losses. But Jiroda, a bootstrap startup, made 2045 crores profit into 2022. So you need to understand either you can create a product which is so good that you can sell it directly to the customer and generate the revenue out there. उसका भी मॉडल होता है, प्राइसिंग क्या करेंगे, व्हाट विल बी द मार्कअप एंड एवरीथिंग, जिससे द कैश फ्लो पैटर्न विल बी देयर इनटू योर सिस्टम. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट, तो हम लोग बैठते हैं तो वो कैश फ्लो का एक मेथड बनाते हैं. सो दैट इज द थिंग. सेकंड हो जाता है कि by selling the company's equity. When we talk about VC firms and angel investors, there also you are selling a part of your company in return of the funds from these VCs and the venture capitalists and the angels. So you need to understand their selling is at both the places. In one, which is like the tough part and the hard part, selling your product to the customers, and the other is the easy part where you are selling a part of your company to the VCs and angel investors. So you need to be clear onto you that you need to do this selling when you are going to get the fundraising, then either to customer or to the investors. So this is the basic definition of fundraising. Second, okay, so this is like really important. Investors motivation, why investor is going to invest into your startup. We hear a lot of you can say good words from investor that we are here to support the youth, we are here to support the new ideas, we are here to bring the changes. ऐसा कुछ नहीं होता है. Investors only come and invest in a company to take enter at the right time when the valuation is low and then exit when the money is coming out. So this is their entire business model: entry and exit. So they will enter at a position when they think that okay, the company is going to do good, and then they will exit whatever it will be. It will be merger and acquisition or IPO or anything. At that point of time, they exit the startup. So this is their business model. You need to understand that uh, for startup, their product going to bring them money. For investor, their money is commodity. उनका जो पैसा होता है उनके पास, वही उनका प्रोडक्ट होता है, उससे ही वे पैसे कमाते हैं. तो दिस इज देयर एंटायर बिजनेस मॉडल. So this is investors only motivation when it comes to funding, that they are going to invest into startup which is going to make them money. यहाँ पे in the slide I mentioned that 10x angel investors are looking for 10x into deal, but at present scenario it is anything between 20x to 25x. So if an angel investors uh, so if an angel investor or a VC firm want to invest into your company, you need to make them believe that they are going to get anything between 20x to 25x into 3 years of time. So if you make them believe this, they are going to invest into your startup. As simple as that. And this is the only motivation with which investors invest into a startup, and nothing else. They are not here to change anything. They are not here to make your our country great. They are not here to uh, youth को promote करना है. They are not here to change the way industries are working. उनके लिए उनका पैसे से पैसा बनाना है. That's all. So always keep that in mind. बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है, तो आप उसको प्रोडक्ट कैसे सेल करोगे. एंड इन्वेस्टर इज ऑल्सो एक कस्टमर क्लाइंट जिसको आप अपनी कंपनी की इक्विटी बेच रहे हो. So just keep that into mind when you are talking to the investors. So these are two basic definitions which I thought that I should share with you all. और भी था like definition of startups and all, but you all into incubation, so you might be knowing about those. Okay, so when we talk about sources of fundraising, I forget to add there is one more model which have started nowadays. Uh, so there are 8 methods
through which you can fund your startup. There are eight methods. People don't know much about it, but there are eight methods through which a startup can fund their initial seed at the seed stages. Generally, the startup founders generally go after angel investor and VC firm, and they ignore the risks. So this is one of the common thing that I see into startup founders, that they only think that angel investor and VC firm, but there are other forms also. So let's see them one by one. Bootstrapping, we all know what bootstrapping is, and uh, every founder which is into incubation center, at least they will be bootstrapping their startup. I raised my when I was working on to my startup back into 2002 2003. First I bootstrapped it, then I raised a family and friend round. So in bootstrapping, generally it is the founder or the entire founding team who put money into their startup, and then create a process or create a, you can say, sales mechanism where cash flow starts to come. And once cash flow is there, they use that cash flow to develop the to grow their company. The growth is slow. When you are bootstrapping, the growth will always be slow, because marketing के लिए बहुत ज्यादा पैसे होते नहीं है. There is like really low marketing budget. Apart from that, जो cash flow होता है वो भी बहुत कम होता है, तो you can't hire good talent from the market, because जो talent होता है they are always expensive. But bootstrapping is a way which is in the recent past I have been seeing, like to take an example, Zerodha का मैंने example लिया था. Then Zoho is there. They both the companies are bootstrap. इन्होंने आज तक एक रुपये भी VC फंड नहीं उठाया. एंड ये दो कंपनी ही है एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया में यूनिकॉर्न्स में which are profitable over 1,000 crores per year. So bootstrapping is a method. Bootstrapping, if you are able to bootstrap for like 1 year or 2 year, then I guess you'll create a company or turn out your startup will turn out into a company which will be larger than life. But the initial 1 year to 2 year, that will be like really hard. So I will advise जो whatever founder who have that resilient nature into them, जो कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, they can only go for bootstrapping. Otherwise ये सबके बस की बात नहीं है. मैंने देखा founders को रोते हुए and dropping their idea and shutting down their startups. So first one is always the bootstrap, the way in which you can fund your startup. Second is the family, friends, and fools. So a lot of you being into incubation center might has, I believe that ये राउंड तो आपने रेस किया होगा, किसी फैमिली से कुछ पैसे ले लिए, फ्रेंड से कुछ पैसे ले लिए. फूल्स इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता व्हाट इज द रिस्क which is involved into funding a startup. So the fools are generally far away relatives, जैसे मौसा फूफा जो भी हो गया. Apart from that, like your colleagues or your ex boss, and they are fools. You can raise money from them, but it is not clear whether your startup, because they don't know the risk of raising a venture into startup ecosystem, that also in India where the competitive landscape is so high. So they put money into your startup. So this is the second round. And in 2000 in 2013 when मैंने अपना startup raise किया था, तो at that point of time I was out of college, I was working, but I was looking for somewhere around, I think at that point of time looking for 15 lakh rupees to 20 lakh rupees for to put into my startup to as the seed capital. But always knew that मेरे पापा तो पैसे देंगे नहीं, because he also always wanted me into a job rather than into entrepreneurship and doing my own. So I was, that point of time I was working with World Bank, so that was another thing. My dad never wanted me to leave World Bank and start working on your own into startups. So I start calling to my friends, because I am graduate हूँ, तो मेरे जितने friends थे वो IIMs के थे. I know कि उनकी job लगी थी after placement, they were getting good salary packages. At that point of time, there were people who were getting salary packages into like 70 lakh, 80 lakh rupees annual. In 2013, I am talking almost 9 years back. So I started calling to all the friends which were into my network, and uh, started asking for 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, 50,000, or whatever they can arrange. By the end of 3 days, I was able to accumulate almost like 14 lakh rupees seed fund for my startup. So this is how friends, family, and fools round are raised. So this is what I did. I raised the seed capital. We ran our startup for 2 years. It got acquired. So that's another story. But this is how, and it is job of a founder to find out the right people
to raise the fund. One thing which is important into this, that you are not going to raise anything on words or promises. Whatever money you are going to raise, it need to be in the form of documentation. Because if you are raising in the form of promises or in the form of you can say words, you won't be able to raise next round, because next round may angel investors or VCs, they are going to ask for the the paperwork for the money that you have raised in the family, friends, and fools round. So what if you are raising this round? Just be sure that you are getting everything documented into your company papers and all. Okay, so the next round is the next type of investment is angel investment, which everybody talks about. So in incubation centers, generally angel investors are the people who invest, and VC generally comes at the later stage. For the first round or the seed round or the pre-seed round, it is general angel investor. So you need to have clarity on this as well, because I have seen a lot of founders, the which are working, which are at this pre-seed or seed stage, which are at the MVP stage. They start reaching out to VCs. VCs कभी पैसे नहीं देंगे to a startup which is at that stage. At that stage, angel investors only invest. ये सबसे ज्यादा रिटर्न लेके भी जाते हैं, बट एंजल इन्वेस्टर्स आर द पीपल who who invest at the most risk. So this is as simple as that, because almost like uh, 9 out of 10 investment of an angel investors fails. और ये fact है, it is an research which is done by Harvard Business Review, the magazine which comes not to be exact, not like 9 out of 10, but only 5 to 6 startup goes to second round from angel round out of 100 startup. So it is less than almost like 0.5% of angel investment succeed. That's why they look for 20x to 25x of return to nullify all the losses that they are having. So this is the angel investor. Who are angel investors? So angel investors are the rich people out there into the society. They have enough money. They can be anything. They can be a CXO of any company. To take an example, uh, the salary of Dipender is the founder of Zomato. His salary is almost like 3.5 CR annual. So he is getting somewhere around 25 lakhs rupees per month. So this is his salary. So he have enough money कि 25 लाख 50 लाख रुपए 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर he can put into an startup. So CXOs generally होते हैं, even the companies like Microsoft के जो CFO होंगे, CTOs होंगे, CIOs होंगे, chief sales officers होंगे, they get really good salaries. So when they have enough money to take risk, because that is their money, so they take risk and put it into startups. The best angel investor that I have ever seen is Sanjay Mehta out there. We all know him, 100x VCs. So when he invested into Oyo Room, he got somewhere around 220x return. When he invested into Flipkart, he got 200x return. So this is the return that he generated. I know somebody who got a return of 330x from Oyo Room. Artha Ventures, Dhamani, what's his name? Uh, Anirudh Dhamani, he invested into Oyo, somewhere around 8 crore rupees. And after 4.5 years, he got back 2,800 crores rupees back from it. So it was a 330x return. So these people are the people who take the maximum risk. These are the people who, you can say, are always at the receiving end, because they don't know much about how to manage a startup board, but they get the maximum returns. So these are generally the people who are like the CXOs, and the people who have like good family money or ancestral money, or the entrepreneurs who just took an exit. To take an example, Ankur Warikoo, he invested into a lot of startup. Ritesh Malikov, Dr. Ritesh Malikov, uh, Innovate, when it got acquired by Oyo Rooms, he started investing. He has invested into almost like uh, I think 40 or 48 odd startups. These are angel investors. You won't be going to find angel investors individually. In India, they generally in India they generally operate through uh, okay.
Okay, in India they generally operate through angel networks. So this is how they operate. Angel networks are generally a pool of angel investors. So there is a, you can say, suppose that I want to run my angel network, which I used to do like 3 years back. So I bring in people who have money, people like CEOs, entrepreneurs who just took an exit, or people who have ancestral money, or who have you can say good old money with them. So I they collect all these kind of people. So they have a good pool of peoples out there, and from there onwards they start investing. Suppose there is a startup which is looking to raise fund into electronic vehicles. They come to us. So I have a pool of 50 angel investors. So there will be like 5 or 10 people who will be interested into who will be interested into investing into EVs. So I will send your pitch deck, जो EV company का. uh, okay. So Lalita and Megha, somebody asked me to talk into Hindi only. So will that be okay? Also, you can talk in English. It's not a problem. You can mix the English and Hindi words. More, jargons, and you can other words you can use in English. Otherwise, you can go in Hindi if it is possible to you. Okay, ठीक है. Okay, done. Yeah. ओके सो जब एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क के पास, एंजल नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि फार्ड नेटवर्क हो गया, मुंबई एंजल नेटवर्क हो गया, एंड चेन्नई एंजल नेटवर्क हो गया, इंडियन एंजल नेटवर्क हो गया. आई एम पार्ट ऑफ 2-3 एंजल नेटवर्क, जैसे मैं फार्ड का पार्ट हूँ. O2 एंजल नेटवर्क हो गया, जिसके थ्रू मैंने जो वीसी फंड बनाया है वो है. तो इन दीज केसेस हमारे पास कोई भी स्टार्टअप होता है, वी रिव्यू whether this startup is investable or not. हमारे पास इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं. वो क्या करते हैं, वो पूरा आपका जो पिच डेक है उसको रिव्यू करते हैं. उसके बाद उनको लगता है कि ये इन्वेस्टेबल है, देन वो कम टू द नेक्स्ट स्टेजेस, एंड जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो फाइनेंशियल मॉडल हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, एंड देन बिजनेस प्लान हो गया, वो मांगते हैं आपसे. उसके बाद इफ वी आर सेटिस्फाइड कि ओके ये स्टार्टअप तो पैसे बना के देगा हमें, देन वी पास इट ऑन टू जो 5 हमारे पास 50 एंजल इन्वेस्टर्स में, जो 5 जो ईवी में इंटरेस्टेड थे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, हम उनको आपका पिच डेक पास करते हैं. तो ऐसे एंजल नेटवर्क काम करता है. तो इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू एंजल इन्वेस्टर्स, जो बहुत सारे मैंने स्टार्टअप फाउंडर्स को देखा है कि एंजल इन्वेस्टर खोज रहे हो, कुणाल शाह को मेल लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग मेल टू रितेश मलिक, कुणाल शाह, अंकुर वारिको, एंड इंडिविजुअल आई ऑलमोस्ट रिसीव लाइक 8 to 10 मेल्स एवरी वीक. वैसे नहीं होता है. एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क्स में, इफ यू रियली वांट टू रीच आउट टू रीच आउट फॉर एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क्स में रीच आउट करो, क्योंकि उनका पूल जो होता है बहुत बड़ा होता है. तो डोमेन एग्नोस्टिक जनरली हो जाते हैं. वो आप किसी भी डोमेन से हो, तो उनके पास कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो उसमें इन्वेस्ट करने को रेडी होंगे. सो यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी. सो दीज आर एंजल इन्वेस्टर्स. these people, ये there is no written rule out there, but जो angel investors होते हैं वो founders और team के personality और उनका जो aggressiveness होता है उस पे बहुत पैसे लगाते हैं, क्योंकि they believe into people, angel investor, क्योंकि वो खुद के कमाए पैसे होते हैं उनके. तो they know कि अगर they टीम में दम है, फाउंडर में दम है, तो they are ready to invest into these startup. So this is something जो बोलते हैं ना कि यार फाउंडर में दम होना चाहिए, टीम में दम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स मिल जाती है. So these are for angel investors. VCs वैसे नहीं करते. VCs किसी और का फंड मैनेज करते हैं, हम लोग आगे स्लाइड्स में देखेंगे. तो वो हमेशा अ, ऐसा लोगों को, वो हमेशा ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं जिनका फाइनेंशियल सॉर्टेड आउट हो. बट एंजल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट ऑन फाउंडर्स. So this was angel investors for you. Okay, so now come the venture capitalists or VC firms. So VC firms are like the big brothers of the startup ecosystems. Uh, these are people who manage huge funds. जो सीरीज ए होता है, nowadays they also सीड राउंड पे भी इन्वेस्ट करते हैं. जैसे सिकोया का सीड है, सर्ज है, सिकोया सर्ज इज फॉर द सीड राउंड इन्वेस्टमेंट, जो फर्स्ट राउंड पे इन्वेस्ट होते हैं. आई थिंक ब्लूम वेंचर्स भी इनिशियल राउंड में सीड राउंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, ब्लूम वेंचर्स ने भी. सो नाउ दे आर आल्सो कमिंग एट द अर्ली स्टेजेस टू गेट to invest into the startup which are going to give them better results at the later stages. So these are VC firms. So VC firm कैसे act करते हैं, you need to understand, and then it will be easier for you to reach out to VC firms. VC firm जो होते हैं वो किसी और का पैसा मैनेज करते हैं, फर्स्ट थिंग.
उसको हम लिमिटेड पार्टनर्स बोलते हैं, एलपीज बोलते हैं। वीसी फर्म जो होते हैं दे आर जीपीज, जनरल पार्टनर्स, जो जैसे आपका एक स्टार्टअप है, आप किसी इन्वेस्टर से पैसे लेके उनका पैसे मैनेज करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाओगे, वीसी फर्म भी सेम करता है। वीसी फर्म लिमिटेड पार्टनर से पैसे उठा के उनका पैसे मैनेज करके इन्वेस्ट करके रिटर्न लेके उसको आगे बढ़ा के फिर रिटर्न देता है उनको। तो वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स आर जस्ट लाइक स्टार्टअप, बट दे ओनली डील, देयर ओनली प्रोडक्ट इज मनी, दैट्स ऑल। बस उनको वही समझ में आता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ अब यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट समबडी एल्सेस मनी। टू टेक एन एग्जांपल, सॉफ्ट बैंक के जो फाउंडर है, उन्होंने $100 बिलियन सऊदी प्रिंस से रेज किया था। वो किसी और का पैसा लगा रहे थे, और वो भी सऊदी प्रिंस का, जिसने he got a journalist killed into an embassy के अंदर उसने करवा दिया। तो सोचो how risky it might, because if somebody is giving you uh, uh, $50 billion or $100 billion, they are not small people, they are quite connected people. So VC firm में थोड़ा risky business ये हो जाता है if you are not SoftBank, or if you are not Tiger Global, or if you are not Sequoia. सो इफ जैसे छोटे वीसी फर्म्स होते हैं, वो दुबई से पैसे उठा लेते हैं, वो इधर से पैसे उठा लेते हैं, उधर से पैसे उठा लेते हैं, एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू स्टार्टअप्स। So that is a risky proposition for VC firms as well. This is one of the main reasons when VC firms invest into a startup, they उनका जो ड्यू डिलिजेंस होता है वो एकदम बिल्कुल लास्ट डिजिट तक ड्यू डिलिजेंस होता है। दे आर नॉट लुकिंग फॉर 20x और 25x ऑफ रिटर्न्स, वो 10x में खुश रहेंगे, बट वो 10x सॉलिड आना चाहिए उनका। ऐसा नहीं है कि दे आर इन्वेस्टिंग एंड 10 में से 9 स्टार्टअप्स आर फेलिंग, दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव लाइक दैट। फॉर वीसीज एटलीस्ट उनका 50-50% का रेशियो होना चाहिए, बिकॉज दे ऑल्सो टेक मैनेजमेंट फी फ्रॉम like SoftBank might have taken somewhere around 20 to 30% of management fee from that $100 billion. तो वो मैनेजमेंट फी भी लेते हैं एंड एवरीथिंग। तो फॉर दैट दे नीड टू ब्रिंग इन गुड रिजल्ट्स, रिटर्न्स, आरओआई। अगर वो 100 बिलियन दिया है सऊदी प्रिंस ने, तो दे नीड टू गिव हिम बैक ऑलमोस्ट लाइक 150 बिलियन इनटू 10 इयर्स का, आई थिंक 10 इयर्स का डील था, वो डील क्लोज था। सो दिस इज हाउ इट नीड टू बी। सो दैट्स व्हाई जब आपको वीसी कैपिटल होंगे, वो आपके फाइनेंशियल पे आपसे क्यूएनए करेंगे। वो नहीं पूछेंगे कि फाउंडर ने कहाँ से पढ़ाई की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो उनका लीगल टीम ड्यू डिलिजेंस कर लेगा, दैट इज ओके। दे विल आस्क अबाउट योर गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी अगर आपने बना के दी है, तो दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट टिल द एंड, कि गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी है। दे आर गोइंग टू टॉक इट अबाउट कि क्या मार्केट है, क्या सैचुरेटेड नहीं है मार्केट, आपका कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, आपका मोड क्या है, डिफेंसिबिलिटी क्या है, एंट्री बैरियर क्या है। जो पोर्टर्स 5 फोर्स थ्योरी होती है, वो पूरा एक एक पॉइंट पे आपसे बात करेंगे। सप्लायर पावर क्या है, बायर पावर क्या है, तब कहीं जाके वीसी कैपिटल, वेंचर कैपिटलिस्ट आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। एंजल इन्वेस्टर्स तो खैर 3 महीने में आपको फंड मिल जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू वीसी बहुत ड्यू डिलिजेंस होगा, टू एंड फ्रो होगा, टर्म सीट पे बात होगी, तो इट टेक्स अ बिट लॉन्गर टाइम। बट जो वीसी फर्म्स होते हैं, दे कम विद देयर ओन नेटवर्क। अगर आपको यू आर कंपनी इनटू इंडिया इनटू SaaS product, you need to launch a SaaS, the same SaaS product into Canada or into US or into any European countries. If you are funded by Sequoia or SoftBank or Tiger Global, आपको एक हफ्ते नहीं लगेंगे, they will help you to set up an office there. So this is the best thing about VCs. They have their own network. They can take you global any day that they want, because that is also going to help them with increase into their money. So this is a VC firm. And as mentioned, that they will talk more on the business plan, and they are going to talk more on the financial side, कि financial projections क्या है आपका, क्या क्या है, जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है, एलटीवी क्या है, लाइफ टाइम वैल्यू क्या है आपकी कस्टमर्स की। सो दे आर गोइंग टू टॉक ऑन दीज basis. Accelerator and incubators, it is also you can say a source of funding, right? Like मैंने जैसे mention किया कि 16th को we are launching our own O2 VC funds. So we have a good amount of fund. We have accumulated a good amount of fund for that. We are working on to deep tech space. So जितने भी startups आएंगे जो select होंगे, we are having a rigorous process of selection of these startups.
तो जितने भी स्टार्टअप सेलेक्ट होंगे डे वन, जीरो डे जो हम इसको बोलते हैं, जिस दिन वो आएंगे एंटर करेंगे, जीरो डे पे वी आर गिविंग देम एनीथिंग बिटवीन 25 लाख रुपीज टू 1 करोड़ रुपीज. That is the growth fund, validation fund we are calling it, validation fund that we are putting into their startup. Ki, okay, these ideas are validated and they are going to go big into the future. So validation fund is something like, first you are as a VC firm, we are validating their idea, we are putting money into their startup so they can, you can say, the as the name suggests, accelerate their operations and processes, so that jab demo day aega, that is after 3 months, they will have a position कि सपोज अभी वो 5 करोड़ के वैल्यू पे हमने 1 करोड़ दिया इन उसमें उसमें इन्वेस्ट किया है, 25 लाख इन्वेस्ट किया, वट एवर दी अमाउंट इज, तो 3 महीने के बाद डेमो डे पे सेम वही वैल्यूएशन हम लोग 25 करोड़ या 50 करोड़ पे लेके जा सके. तो हमने जो जीरो डे पे पैसे इन्वेस्ट किए थे, इट विल ऑलवेज गो लाइक 5x to 10x एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो 3 महीने में वी कैन ग्रो. तो ऐसे एक्सिलरेटर्स काम करते हैं. वाईसी भी इसी मॉडल पे काम करता है. 100x VCs भी इसी मॉडल पे काम करता है. वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम मॉडल. देयर आर अदर एक्सिलरेटर्स. तो ये ऐसे काम करते हैं. बहुत से प्राइवेट एक्सिलरेटर्स यहाँ पे होते हैं जो आपको एक्सेलरेशन के नाम पे मेंटर्स का नाम दिखा के, ये दिखा के वो क्या करते, दे इनरोल यू, आपसे इक्विटी ले लेंगे, वो ले लेंगे, बट वो फंड्स देते नहीं है जीरो डे पे. तो डोंट फॉल फॉर देम. जीरो डे पे जो भी एक्सेलरेटर पैसे नहीं दे रहा, दैट मींस दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. दैट्स ऑल. एक्सेलरेटर का सीधा सा फंड है, यू आर गोइंग टू गेट मनी ऑन जीरो डे, जो कि YC started with the safe notes, and then demo day पे तो obviously there will be, you need to be capable to raise funds on demo day, because the accelerator are going to bringing like 100 200 500 VCs and investor into the same room, so that you can pitch to them, you can network with them. So uh, there is a process, there is a, you can say, process which we have defined into our accelerator, the VC fund. That is, every for the next 3 months, every after every 15 days, we are going to have a dinner with investors. So it is more or less like a cocktail dinner with investors. So it is more or less like a networking event where founders will come, the founders of the startups which are selected into our VC fund, and they will be interacting with the investors. So when there is a casual investors, when I will be talking about how to reach out to investors, you will know that it works. And this model is started by YC, and this is the only reason that YC is flourishing so much, that because they bring investors and founders on the same level. It is not like कि investors भगवान है. So they bring them both on the same level, and then the interaction is at a completely different level. So accelerator and incubators होते हैं. There are some AICs, Atal Incubation Centers, which provide some fund, a small size fund, like anything between 5 lakh to 25 lakh rupees to the incubatees. So I'm not sure about that, but there is something, some program out there under which they get money. So this is the another form from where you can raise funds. Bank loans, nobody explored it because everybody think that ये bank loan तो interest लेंगे, but you will be amazed to amazed to नो कि बहुत सारे ऐसे स्कीम अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आ रहे हैं जो बहुत मिनिमम इंटरेस्ट रेट 1 से 2% पे भी आपको बैंक लोन्स दे रहे हैं. बहुत से तो बहुत से तो इंटरेस्ट फ्री बैंक लोन्स भी है. सो इफ यू आर ए स्टार्टअप और आपको अगर लगता है कि आप, क्योंकि देखो आपको हर टाइम वीसी एंड एंजल फंड नहीं मिल सकता, वो एक स्टेज पे आने के बाद ही मिलता है वीसी एंड एंजल फंड्स. तो अगर आप उस स्टेज पे नहीं है और आपको उसके लिए भी आपको चाहिए कैपिटल एक्सपेंस अगर लग रहा है आपको, या वर्किंग एक्सपेंस लग रहा है जो आपको उस स्टेज तक लेके जाए जहां पे आप इन्वेस्टेबल हो एक एंजल राउंड के लिए और इन्वेस्टेबल हो और एक वीसी राउंड के लिए, तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू शो कॉन्फिडेंस इनटू योर वेंचर. आपको अपने स्टार्टअप में इतना तो कॉन्फिडेंस दिखाना होगा कि आप बैंक लोन सिक्योर कर सके उसके लिए. और इट इज ओके टू टेक बैंक लोन्स. इंडिया में मैं मुझे पता है कि इंडिया में बोलते हैं यार बैंक लोन्स लेना, दे कंसिडर इट इज लाइक ए सिन, बहुत गलत चीज है कि लोन लेके कोई धंधा कर रहा है. बट इफ यू गो टू यूरोपियन कंट्रीज, इफ यू गो टू यूएसए, वहां पे बैंक लोन लेना इतना आसान है फॉर वेंचर. आप अपना पिच डेक और बिजनेस प्लान लेके बैंक में जाओगे और आप बाहर एक अपने स्टार्टअप के लिए लोन लेके आ सकते हो. इंडिया में वो धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं. इवन पार्लियामेंट में भी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैम है, उन्होंने बोला था कि वी नीड टू, बैंक को थोड़ा रेगुलेशंस कम करना पड़ेगा ताकि स्टार्टअप्स को बैंक लोन मिल सके. सो गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट. आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू वर्क बिकॉज गवर्नमेंट जॉब है, बट
यू कैन गेट लोन्स। एंड इसका भी सीधा होता है, टर्म लोन्स होता है। टर्म लोन्स हमेशा सीड फंड होता है, फिर वर्किंग कैपिटल होता है जिसको हम ग्रोथ कैपिटल बोलते हैं अब हमारे वीसी के टर्म में। एसेट बैक्ड लोन्स होता है जो तुम्हारा सीरीज ए के बाद सीरीज बी हो जाता है जब ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं उसको ग्रो करने के लिए। तो बैंक लोन्स भी उसी टाइप के होते हैं। टर्म लोन्स हो गया, सीड राउंड हो गया, वर्किंग कैपिटल लोन हो गया, सीरीज ए हो गया, एसेट बैक लोन्स हो गया, दैट इज सीरीज बी एंड सी एंड ऑल। एंड उनका भी इंटरेस्ट रेट होता है बहुत कम होता है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मिनिमाइज इट एज मच एज इट कैन, एंड देयर आर सम लेंडिंग कार्ट है, वहां से यू कैन रेज up to 2 CR into like 2 days of time, 48 hours, without any asset backing of any asset. So asset free loans भी मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एसेट नहीं है, आपके पास ऑफिस नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो दे आर नॉट गोइंग टू गो गिव यू लोन्स। सो यू कैन एक्सप्लोर दिस ऑप्शन एज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो a very good फंडिंग ऑप्शन। स्टार्टअप इंडिया स्कीम हमेशा वहाँ पे कोई ना कोई चैलेंजेस चलते रहते हैं, कोई ना कोई ग्रांट्स चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा था देयर वाज अ challenge for EV electronic vehicle which is was going on। उसका जो ग्रांट मनी था, प्राइज मनी था, वो 2 CR था। 2 CR इज ऑलमोस्ट लाइक 250 के डॉलर्स, 250 $2.5 लाख हो जाते हैं, विच इज ऑलमोस्ट लाइक ए सीड राउंड। तो आप उस पे जा सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीड स्कीम, सीड इन्वेस्टमेंट स्कीम निकला, विच इज आल्सो गुड। तो आई थिंक यू कैन एक्सप्लोर दैट एज वेल। एंड बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स आ रहे हैं, इवन लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आर गेटिंग कनेक्टेड विद दिस स्टार्टअप इंडिया स्कीम। वो अपने CSR के अंडर से बहुत सारे पैसे दे रहे हैं। टू टेक एन एग्जांपल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है, दे हैव उन्होंने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में स्टार्टअप को अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करने के लिए 300 करोड़ का फंड बनाया है। सो आई वाज टॉकिंग टू द पर्सन जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के हेड है उनका, लेकिन वो स्पेसिफिक था कि एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी, क्लीन टेक, और वो था उनका सस्टेनेबल गोल्स है ना। तो अगर वो है तो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट। उन्होंने 300 करोड़ का अपना फंड बनाया था टू इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप जो आइडिया इंक्यूबेटिव स्टेज पे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम में, आपको वो भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ओके, सो इसमें मैं एक मिस कर गया क्योंकि ये प्रेजेंटेशन अब पुराना था। एक आजकल आपने देखा होगा देयर इज अ न्यू ट्रेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स जिसको हम क्राउड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। टू टेम नेम ऑफ यू, टाइक है, टाइक इन्वेस्टिंग इज देयर, पॉड इज देयर, देन सटीक इज देयर। सटीक तो मेरे मेंटी का है, आई नो द फाउंडर ऑफ टाइक एंड आई नो द फाउंडर ऑफ पॉड, दे आर लाइक गुड, वी आर लाइक गुड फ्रेंड्स। सो ये सब क्या है कि दे, अगर आपको छोटा फंड टिकट साइज रेज करना है, यू आर नॉट लुकिंग टू रेज एनीथिंग बिटवीन 1 करोड़ करना है, 5 करोड़ करना है, 10 करोड़ करना है, यू जस्ट वांट टू रेज 20 लाख रुपीज, और यू जस्ट वांट टू रेज 25 लाख रुपीज, मैक्सिमम 50 लाख तक रेज करना है, ज्यादा नहीं करना। इन्वेस्टमेंट के पास, VCs के पास जाएंगे, इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। आप इस प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं। टाइक हो गया, पॉड हो गया, सटीक हो गया, और भी होंगे। ये 3 को मैं जानता हूँ पर्सनली, मैं इन तीनों के फाउंडर्स को जानता हूँ, दैट्स मैं इन तीनों का नाम ले रहा हूँ। तो आप इन पे जाओगे, और इन तीनों में मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स दिए भी है जिन्होंने फंड रेज किए हैं, तो दैट्स व्हाई। तो इन पे अगर आप जाएंगे तो आप अपना टॉक टू दीज पीपल जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, वो आपका पिच डेक बनाएंगे, आपका प्रोजेक्शन एंड एवरीथिंग मंगाएंगे। और अगर आप रेवेन्यू, प्री रेवेन्यू भी है, रेवेन्यू आपका नहीं आ रहा बट ट्रैक्शन है, देन आल्सो यू कैन रेज फंड फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स। छोटा टिकट साइज है, ऐसा नहीं है। और द बेस्ट थिंग इज दैट आपको यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी होगी, ये सी सॉप्स के इंस्ट्रूमेंट होता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जैसे इक्विटी हो गया, डेप्थ हो गया, फिर CCD हो गया जो कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होता है। देन सी सॉप से एक नया आया है, सी सॉप हो जाता है कि कम्युनिटी स्टॉक ऑप्शन प्लान और कंज्यूमर और कस्टमर स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो इसमें आपका इक्विटी डाइल्यूट नहीं होता है। द बेस्ट थिंग इज दैट, तो आप यहाँ से फंड रेज करोगे, इक्विटी भी डाइल्यूट नहीं होगा। बाद में आप 2x, जब इफ यू आर स्टार्टेड डूइंग वेल, तो आई थिंक फर्स्ट ईयर के बाद आपको 2x रिटर्न करना होगा, सेकंड ईयर के बाद 3x रिटर्न करना होगा। और यहाँ पे कोई एक बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा है। अ पर्सन हु इज हैविंग लाइक 5,000 वांट टू इन्वेस्ट इनटू योर स्टार्टअप, वो 5,000 भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो कम्युलेट करके पूरा 50 लाख, 25 लाख आपको जितना भी रेज करना है वो कर देंगे। बट ऐसे ये क्राउड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो क्राउड 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, जिसको जितना किया उसको उतना ज्यादा वो अपना इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डाइल्यूट करके दे देते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म विच इज वी आर सीइंग फॉर द लास्ट 1.5 years। सो यू कैन एक्सप्लोर दिस ऑल्सो, अगर आपका टिकट साइज छोटा है, ज्यादा पैसे रेज नहीं करने हैं तो।
एंड आपका पॉड ने पहले आइडिया स्टेज पे भी पॉड इन्वेस्ट करता था, बट रिसेंटली क्योंकि जो हमारा फंडिंग विंटर चल रहा है अभी, बिकॉज ऑफ दैट अब वो इस स्टेज पे उन्होंने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। तो दे आर ओनली लाइक ट्रैक्शन तो होना चाहिए, रेवेन्यू है तो वेल एंड गुड। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट, ये था टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स की और इन्वेस्टमेंट्स की, कहाँ से हम इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हैं, कहाँ से इन्वेस्टर्स ला सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, पिच डेक सबको पता है, पिच डेक तो कि कुछ करे ना करे, लेकिन सबसे पहले पिच डेक बनाते हैं सारे फाउंडर्स, विच इज लाइक रियली बैड, बट स्टिल आई डोंट लाइक पिच डेक्स, आई रियली हेट पिच डेक, बट या पिच डेक्स बनाते हैं। एंड जब भी पिच डेक बनाते हैं, आई जस्ट वांटेड टू गिव वन टिप आउट हियर, ऑलवेज रिमेंबर कि पिच डेक जो आपका होता है वो आपका सेल्स डॉक्यूमेंट होता है, वो आपका स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो आप पिच डेक में जो पूरा प्लान, बिजनेस प्लान, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी एंड ये वो डालते हैं, दैट इज नॉट द राइट पर्पस। पिच डेक कभी 10 से 12, मैक्सिमम 15 स्लाइड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें वेलकम ऑन थैंक यू पेज भी होता है। ठीक है, तो पिच डेक आपका सेल्स डॉक्यूमेंट होता है, वो सिर्फ इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का इन्वेस्ट जनरेट करने के लिए होता है, जस्ट रिमेंबर दैट। अगर मेरे पास 15 पेज से ज्यादा का पिच डेक आता है, मैं कभी नहीं देखता हूँ। मैं उसको मैं देखता हूँ कितने नंबर ऑफ पेजेस में, उसको क्रॉस करके छोड़ देता हूँ, चाहे कितना भी अच्छा आइडिया और ये हो। ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ सेल्स डॉक्यूमेंट। देन आता है बिजनेस प्लान, विच इज अ स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट। ये एग्जॉस्टिव बनाओगे तो मैंने 180 पेज का भी देखा है जोमेटो का। अगर आप ब्रीफ बनाओगे तो 25 से 30-40 पेज का होता है, जिसमें गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी होगी, तुम्हारा पूरा मार्केटिंग होगा, ऑपरेशन प्लान होगा, फाइनेंशियल प्लान होगा, एवरीथिंग एवरीथिंग, प्रोडक्ट प्लान होगा, प्रोडक्ट का फ्यूचर रोड मैप होगा, एवरीथिंग। दिस इज जो आप पिच डेक में डालते हो वो बिजनेस प्लान में होना चाहिए। आपका जो बिजनेस प्लान होता है वो आपका स्टार्टअप वर्ड डॉक्यूमेंट में होता है, ईच एंड एवरीथिंग। और एक बार आपने बिजनेस प्लान बना लिया है, उसमें केपीआईज होते हैं कि क्या आप ट्रैक करोगे, क्या नहीं ट्रैक करोगे। ट्रैकिंग जो होता है दैट इज फॉर टू अंडरस्टैंड दी, क्या कहते हैं, जो हम टारगेट्स देते हैं अपने सेल्स टीम को, जो टारगेट देते हैं मार्केटिंग टीम को, तो केपीआईज होते हैं, वो बिजनेस प्लान के अंदर होते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। एंड ये स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट होता है, एक बार बना लो तो उसको बाइबल की तरह फॉलो करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रीट योर बिजनेस प्लान एज ए रिलीजियस बुक फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। जो उसमें लिखा है 6 महीने तक इंप्लीमेंट करो। अगर नहीं हो रहा है तो 6 महीने के बाद फिर देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि केपीआई है तो आपको पता चलेगा कि क्या काम नहीं कर रहा है, टारगेट थे उसमें, नंबर्स थे, क्या काम नहीं कर रहा है, तो उस पार्ट पे दोबारा काम करो। दिस इज हाउ वन नीड टू वर्क ऑन दी बिजनेस प्लान। फिर आता है फाइनेंशियल मॉडल। फाइनेंशियल मॉडल आपका, जैसे मैंने बताया, बिजनेस प्लान आपका वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, आपका कंपनी। फाइनेंशियल मॉडल एक्सेल सीट और नंबर्स में आपकी पूरी कंपनी होती है। तो कैपेक्स क्या हो रहा है, जो कैपिटल एक्सपेंस क्या हो रहा है, वर्किंग एक्सपेंस क्या है, कॉक्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका क्या हो रहा है, आपका 5 साल का प्रोजेक्शन क्या है, आपका रेवेन्यू क्या आ रहा है, आपका डिप्रिसिएशन क्या आ रहा है, आपका कैप टेबल क्या है। कैप टेबल इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रीचिंग आउट टू इन्वेस्टर्स। कैपिटलाइजेशन टेबल होता है, इट इज बेसिकली द ओनरशिप टेबल ऑफ योर स्टार्टअप, कि किस फाउंडर को फाउंडर के पास कितने इक्विटी है। अगर कोई एक्सटर्नल आपने फ्रेंड और फैमिली राउंड्स रेज किया तो उसके पास कितनी इक्विटी है। अगर आपने किसी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए उनको कुछ इक्विटी दी है तो उनको उनके पास कितनी इक्विटी है। तो दैट इज बेसिकली कैप टेबल। और इसमें एनुअल रन रेट होता है, मंथली रन रेट, एवरीथिंग। जो फाइनेंशियल मॉडल होता है वो एग्जॉस्टिव बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो सही बन गया तो इन्वेस्टर्स एंड वीसीज को समझ में आता है केवल नंबर्स, और वो फाइनेंशियल मॉडल में ही जाता है। तो वर्क ऑन द फाइनेंशियल मॉडल। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो टेक अ हेल्प वाले प्रोफेशनल। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे cvs.xyz, हमारी वेबसाइट पे कुछ फ्री टेम्पलेट्स भी पड़े हैं, कुछ पेड है बट कुछ फ्री भी है। तो जो जनरल वाला फ्री है, आप लोग उसको डाउनलोड करके आप उसको यूज कर सकते हैं। सारे फॉर्मूलाज ये सब लगे हुए, उसका ट्यूटोरियल वीडियो भी है कि कैसे आपको उसमें फिल करना है डेटा। आप करोगे तो आपका 5 साल का पूरा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन विद वैल्यूएशन निकल जाता है। तो यू कैन गो एंड चेक दैट। आई थिंक ललिता मेघा कैन शेयर दैट वेबसाइट विथ यू anytime so that you can avail that. Yes, sir, I Okay, will share it to all the startups. okay. तो ये डॉक्यूमेंट पार्ट हो गया, एंड द माइक इज म्यूटेड. No, no, you sir, you are audible properly. Okay, because my screen just went black, so that's why. I am Yeah, no, audible. no. I Yeah, can yeah, move you to are. the. Yeah, you Okay, can move to the next person. okay. So the next will be the what is like more important, how to reach out to the investors, the effective method to find and approach the investors. So let's talk about that. So
First thing, and it is like the most important thing, that every investors have their mandate, thesis and philosophy. अगर आपको ये लगता है कि आप किसी भी इन्वेस्टर को रीच आउट करके आप अपना पिच डेक शेयर कर दो और वो इंटरेस्टेड होगा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये कभी नहीं होगा. हर इन्वेस्टर, एवरी इन्वेस्टर, जैसे मैं अभी रिपीट 2-3 बार कर चुका, वी विल बी वर्किंग ओनली ऑन डीप टेक. डीप टेक में भी हमने 3-4 डोमेन पिक किया है. डीप टेक में 7 से 8 डोमेन है, हम सब पे काम नहीं कर रहे हैं. तो हर इन्वेस्टर का एक थीसिस होता है. बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो केवल फिनटेक में इन्वेस्ट करते हैं. बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि वेब 3.0 में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एनएफटी में इन्वेस्ट करेंगे, क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करेंगे. तो हर इन्वेस्टर का एक थीसिस होता है, मैंडेट होता है और फिलॉसफी होता है. यहाँ तक इनकी फिलॉसफी और मैंडेट में यहाँ तक ये जाता है कि को फाउंडर टीम उनको कितने बंदों की चाहिए. सिंगल इन्वेस्टर्स में वो नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको को फाउंडिंग टीम में कितने बंदे चाहिए, ये भी वो देखते हैं. कुछ में तो मैंने देखा है वो थोड़ा गलत है, बट मैंने देखा है कि दे आर लुकिंग फॉर उनके थीसिस डॉक्यूमेंट. कभी कभी वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, तो उसके थीसिस डॉक्यूमेंट में देखा है कि दे वर ओनली इन्वेस्टिंग इनटू स्टार्टअप्स जिनके फाउंडर्स आईटी और आईएम से थे, विच इज लाइक रॉन्ग. दिस इज लाइक कंप्लीटली रॉन्ग. बट होते हैं कुछ इन्वेस्टर्स, तो उनका वो थेसिस था, उनका वो मैंडेट था, मैंने देखा था. तो ये होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैंडेट. इफ यू आर नॉट श्योर, गो एंड गूगल. गूगल पे आपको सब मिल जाएगा. जनरली इंक 42 की वेबसाइट पे दे जनरली प्रोवाइड ऑल द थीसिस एंड मैंडेट एंड फिलॉसफी ऑफ ऑल द वीसी एंड द एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क्स. सो वहां पे आपको, यू आर गोइंग टू गेट इट. अगर नहीं मिलता है तो डू अ बिट ऑफ रिसर्च कि उन्होंने कैसे कैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए हैं और क्या पैटर्न है उनका. अगर आप पैटर्न समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका स्टार्टअप उनके पास जाने के लिए कि है कि नहीं. सो दिस इज द राइट वे. You need to research and identify potential investors who have a track record of investing in similar companies or industry like you. अगर आप आपको पता है कि ठीक है यार, ये तो एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क है, आपने उनको अपना पिच डेक भेज दिया. आप लॉजिस्टिक में, आपका स्टार्टअप लॉजिस्टिक में और फ्लीट मैनेजमेंट में, बट वो केवल ई कॉमर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कभी क्या कभी इन्वेस्ट करेंगे आपके स्टार्टअप में? कभी नहीं करेंगे. और ऐसे होता क्या है कि डे बाय डे जो फाउंडर्स होते हैं वो डीमोटिवेटेड होते जाते हैं कि यार कोई तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है. तो द राइट वे इज टू रिसर्च अबाउट द इन्वेस्टर्स. आप किसी को भी नहीं भेज सकते हो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप किसी को भी नहीं भेज सकते हो. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको, यू नीड टू आइडेंटिफाई, देन ओनली यू नीड टू send your PPTs to these people. Okay, the second is the network. It is always it is like really important. अभी मैंने YCY कॉम्बिनेटर की बात की थी, जहाँ पे वो इन्वेस्टर्स एंड फाउंडर्स का नेटवर्किंग डिनर कराते हैं, डिनर एंड कॉकटेल, जहाँ पे सबको एक लेवल पे लेकर आ सकते हैं. देयर वाज अ रिसर्च विच वाज कंडक्टेड. उस रिसर्च में ये पता था 90% ऑफ टाइम जो स्टार्टअप्स फंड हुए हैं, उसको किसी ना किसी ने इन्वेस्टर से मिलवाया है. Correct. तो एक क्या कहते हैं, कोल्ड इंट्रोडक्शन और वार्म इंट्रोडक्शन किसी ने करवाया है. नोन बंदे, द पर्सन हु इज नोन टू द इन्वेस्टर, उसने एक स्टार्टअप फाउंडर को कोल्ड या कोल्ड इंट्रोडक्शन और हॉट इंट्रोडक्शन, जो हम बोलते हैं वार्म इंट्रोडक्शन, जो भी हो वो करवाया है. तो उसके बाद ही 90%, इन 90% ऑफ कोर्सेज तब वो स्टार्टअप फंड रेज किए हैं. तो इट इज, इसीलिए नेटवर्किंग इज रियली इंपॉर्टेंट. मैंने देखा है जो फाउंडर्स बोलते हैं यार हम अपने प्रोडक्ट पे काम करेंगे, हमारे प्रोडक्ट में दम होगा, इन्वेस्टर्स खुद चल के आएंगे. कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, तुमको शटर गिराना पड़ेगा अपने स्टार्टअप का. एंड इट इज अ फैक्ट. You need to go out into the field, you need to meet, you need to attend the sessions जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट सेशंस होते हैं, जो इन्वेस्टर कनेक्ट होता है, जो मीटअप्स होते हैं ऑल. आपको यहाँ जाना होगा. थोड़े पैसे आपको अपने इवेंट्स, पीआर एंड कॉन्फ्रेंसेस में खर्च करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आप वहां पे लोग से मिलेंगे. ठीक है, 10 में से 3 ही होंगे जो काम के होंगे, 7 बेकार होंगे, बट ये 3 ही आपको हेल्प करेंगे टू रीच आउट टू द राइट इन्वेस्टर. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज, मैंने देखा है, आई आई मैं अभी दी एंजल नेटवर्क, जो लुधियाना का एंजल नेटवर्क है, मैं उनके एक इवेंट में गया था. तो वहां पे आई मेट जो हीरो होंडा का जो हीरो होंडा का इन्वेस्टमेंट फंड मैनेज करते गुजरात का, मैं उनसे मिला था. और वहां पे मेरे सामने एक फाउंडर आया. फर्स्ट ही स्टार्टेड टू हैव ए ड्रिंक विद अस, बियर पिए, उसके बाद फिर वो बात करने लगा. फिर मैंने ही उसको इंट्रोड्यूस कर दिया कि अरे सर, आप लोग भी तो अर्ली स्टेज को देख रहे थे, दिस गाइस आर बिल्डिंग सच एंड सच थिंग. वो जो फाउंडर था वो मुझे पिछले आधे घंटे से जान रहा था.
जो इन्वेस्टर्स था मैं उसको पहले से जानता था। मैंने ऐसे ही कोल्ड इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद देयर वर अदर पीपल आउट देयर, बाकी के और भी मेरे कलीग्स थे, फ्रेंड थे, और ये थे जो फाउंडर्स थे, मैं उनके साथ चला गया। 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स मुझे ये न्यूज मिला कि गुजराल्स ने उसमें मुंजाल्स ने उसमें इन्वेस्ट किया है, जो हीरो होंडा के मुंजाल्स फैमिली, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो वो एक छोटा सा कोल्ड इंट्रोडक्शन, एंड फ्रॉम देयर दैट गाय, वो फाउंडर वाज गुड, ही वाज फ्रॉम आईआईटी रुड़की, उसने वहां से पिकअप किया एंड गॉट इट फंडेड। तो ऐसे फंडिंग सिनेरियो होता है। नेटवर्क इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप नेटवर्क नहीं करते हो, देखो घर में बैठ के कभी तुम स्टार्टअप रेस नहीं कर पाओगे, यू नीड टू गो आउट, एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप हफ्ते में 4 दिन नेटवर्किंग कर रहे हो, बट एटलीस्ट मेक ए कैलेंडर, मेक ए प्लान, चेक करो कि आपके एरिया में कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं जो कि ऑथेंटिक और गुड हो। देन ऑल्सो चेक कि कुछ ऐसे भी ऑनलाइन इवेंट्स होता है जिसमें यू कैन रीच आउट टू दीज पीपल, तो जस्ट check that and be part of these networking event. Cold introduction, warm introduction, really important. 19% of times funding तभी मिलती है जब कोई आपको इंट्रोड्यूस करता है इन्वेस्टर से इन एनी वे। एक कोल्ड ईमेल भी जा सकता है कि हाय, जैसे मैं बहुत सारे ईमेल्स करता हूँ आदित्य को जो कि सीईओ है फार्ड नेटवर्क का, या करण को जो कि फाउंडिंग पार्टनर है फार्ड नेटवर्क का, कि हाय करण, हाय आदित्य, सो I am copying such and such person into this mail. He is the founder of such and such uh, startup. They are working on this problem, and I find their startup is something which is going to make an impact into the future. They have some good traction and revenue. और मैं सूट कर देता हूँ मेल, तो जनरली मेल यही आता है, ओके वी विल टेक इट फ्रॉम हियर। सो एक कोल्ड इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, फॉर दैट यू नीड टू नेटवर्क। थर्ड, कॉल फॉर इन्वेस्टमेंट्स। फ्रॉम टाइम टू टाइम एंजल नेटवर्क एंड वीसी फर्म्स जो होते हैं ना, वो मीडिया में आके बोलते हैं कि हम लोग इन्हें, टू टेक एन एग्जांपल, अभी रिसेंटली आई थिंक चिराते वेंचर्स करके आया था, चिराते वेंचर्स पता नहीं, बानी कोला का जो है, कलारी, कलारी ने बोला है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू वेब 3.0 एंड दे हैव क्रिएटेड अ फंड ऑफ $100 million। तो इनडायरेक्टली उन्होंने अनाउंस किया कि जितने भी स्टार्टअप वेब 3.0 में कर रहे हैं, उन्होंने स्टेज भी शायद ग्रोथ स्टेज उन्होंने अनाउंस किया था, दे कैन स्टार्ट रीचिंग आउट टू अस फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो इसको बोलते हैं हम कॉल फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो टाइम टू टाइम कीप ऑन ट्रैकिंग द योर स्टोरी एंड कीप ऑन ट्रैकिंग Inc 42, ये दो है, and Tracker is also a really good online magazine। वैसे Inc 42 and Your Story ज्यादा बड़ा नाम है, but in Tracker is also good, and VC Circle is also good। So you just need to keep track of this call for investment. From time to time, there will be one angel network or the VC firm which are going to come forward and say that we are created a fund and we want to invest such and such amount into such and such domain at such and such stage with such and such kind of founders। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको पता हो जाएगा कि किसको हिट करना है। जब आपको ये पता है कि किसको हिट करना है, तब तो 90% प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो ही गया। दिस इज वन वे टू रीच आउट टू द इन्वेस्टर्स एंड रियली गुड वे। एट टाइम्स तो मैंने देखा है कि योर स्टोरी में वो ईमेल एड्रेस भी दे देते हैं और व्हाट्सएप नंबर्स भी दे देते हैं कि रीच आउट टू अस, सेंड योर pitch deck at such and such email id, we are open for new ideas and all। Even I think this will be 13th cohort for 13 cohort for 100x VC जो संजय मेहता का है। तो व्हाट 13 कोहोर्ट में उनके तो उनका ईमेल आईडी अवेलेबल होता है, यू जस्ट नीड टू गो ऑन एंड फिल द फॉर्म्स अप। जब वो ये करते हैं, कॉल फॉर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोहोर्ट अनाउंस करते हैं, आप इन फॉर्म फिल करो, जस्ट सेंड इट अक्रॉस एंड विद देन 2 to 3 days उनका रिव्यू भी आ जाता है कि आप सिलेक्टेड हो कि रिजेक्टेड हो। लास्ट कोहोर्ट में देयर वर ऑलमोस्ट लाइक 1200 people who have applied for 9 positions out there। So this is how it goes, but you need to keep a track on call of investment। Okay, so this is something which I ask my the mentees or the people who come under my strategic consultancy part or the fundraising consultancy part, advisory firm। I ask my founders to do this cold email method and building in public. So it starts with networking. You go into an event, you meet an investor, you get a exchange business card with them, you come back, uh, send a
you can say LinkedIn connection request to them if they are connected with you. Then every month at this time, you know that you are not investable. You need to build your startup to become to take it up to a investable position. So you know that it is not investable. Every month you are going to share the progress of your startup, like a newsletter kind of thing, to the investors. So if you are working on a problem which interests them, or working on a problem which is like that they are interested in, they will keep an eye onto your newsletters. And I have seen, with this method, I have three of my mentees have raised fund with this method only. So they keep on sending the newsletter progress. Okay, sir, this year this month we have completed this and this part into our tech department. ये stack upload कर दिया, ये features add कर दिए है. This was our traction. हमारी market जो हमारी marketing और go to market strategy थी, under that हम लोगों ने इतने partners बना लिए हैं. We are going at this pace. हमने इतना revenue generate कर दिया है. Revenue तो बहुत ज़्यादा नहीं, but we are going to put in uh, more capital into the marketing budget, then the revenue is going to suit up. तो ऐसा करके वो एक न्यूज़ लेटर बनाते हैं, मंथली वो सेंड कर रहे थे, 6 महीने तक उन्होंने सेंड कर दिया. इन्वेस्टर की तरफ से ही मेल आया था उनके पास कि प्लीज कम एंड मीट अस, वी वुड लाइक टू डिस्कस मोर अबाउट योर वेंचर. तो ये कोल्ड मेथड हो गया. इसको हम बिल्डिंग इन पब्लिक भी बोलते हैं. बिल्डिंग इन पब्लिक क्या होता है कि हर हफ्ते फाउंडर होता है, पूरे हफ्ते में क्या उसके स्टार्टअप में हुआ उसका एक लिंक्डइन पोस्ट बना के शेयर करता है. उसमें इन्वेस्टर्स जिसको वो टारगेट कर रहा है, जो फर्स्ट मेथड से मैंने बोला था, जहां पे थीसिस एंड मैंडेट आपके स्टार्टअप से मैच कर रहा है, वहां से उनको ये देखना है कि कौन कौन से मैच कर रहा है. फिर आप लिंक्डइन पोस्ट बनाओगे, आपने क्या किया पूरे हफ्ते में, आप कैसे ग्रो कर रहे हो, आप कैसे आगे जा रहे हो. इवन अगर आपने अगर एक सीटीओ हायर किया तो मेंशन दैट आल्सो देयर. एंड तब आप उनको टैग करोगे, तो इससे क्या होता है कि यू आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ देम. एंड जैसे मैंने मैंडेट बताया, जैसे मैंने इन्वेस्टर्स मोटिवेशन बताया कि अगर वो पैसे लगाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या. उनका तो प्रोडक्ट ही पैसा है, वो उससे ही पैसे कमाते हैं. तो दे ऑल्सो लुक फॉर, एक स्टार्टअप को फंड की जितनी जरूरत होती है, एक इन्वेस्टर को एक अच्छे स्टार्टअप की उससे ज्यादा जरूरत होती है. उनका तो रोजी रोटी ही वही है. अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या. Correct. तो दे ऑलवेज कीप एन आई, वो इकोसिस्टम में हमेशा अच्छे स्टार्टअप्स खोजते रहते हैं. तो ऐसे आप क्या करोगे, ऐसे आप उनके नजर में रहोगे. और जब उनको लगेगा कि यू आर एट ए स्टेज जहां पे वो उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो खुद रीच आउट करेंगे. अब मैं बता रहा हूँ, तीन तीन मेंटीज, तीन स्टार्टअप्स विच वर अंडर मी, दे रेज फंड थ्रू दिस मेथड. ठीक है, ये 3 महीने से 6 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि यू नीड टू बिल्ड द स्टोरी अराउंड इट, और आपको स्टार्टअप भी अपना इन्वेस्टेबल बनाना पड़ता है. बट इट इज वन ऑफ द मेथड दैट आई हैव सीन, जिसमें apart from building the startup, आप can uh, 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 get into the eyes of the investors as well. Okay, so यहाँ पे just one thing which I missed, and I think we also reaching out to the time, 5 तो बज ही गए हैं. So when you are starting a investment process, you need to assign one person from your team for it. कोई भी बंदा आपके टीम से ऐसा नहीं है कि कोई भी रीच आउट कर देता है, इन्वेस्टर्स को जाके मिल रहा है. यू नीड टू असाइन वन पर्सन फ्रॉम योर टीम फॉर द इन्वेस्टर्स, जिसको हम इन्वेस्टर रिलेशन मैनेजर्स बोलते हैं. वो एक बंदा तो वही डील करता है, एंड वही सारा कुछ करता है. एंड अगर इफ दैट पर्सन इज फ्रॉम मार्केटिंग एंड सेल्स बैकग्राउंड, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज ए टेक पर्सन, ए टेक्नोलॉजी वाला पर्सन जाके इन्वेस्टर्स के सामने नहीं अपने स्टार्टअप को बेच सकता है. Just look for Hmm. it when you are going for the reaching out to the investors. It is like really important. Second, ये भी होता है, जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले होते हैं उनको फॉलो अप का बहुत आदत होता है. हम लोग जानते हैं कि सेल्स का कितना फॉलो अप मेल्स आता है, आता रहता है, आता रहता है. तो इन्वेस्टर्स के साथ भी वो करना पड़ता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज, जैसे मेरी डॉक्टर अनुरुद्ध मालपानी से बात हो रही थी, बता रहे थे कि यार ऑन एन एवरेज दे रिसीव ऑलमोस्ट लाइक 20 पिच डेक और ईमेल्स एवरी डे. तो वो लाइक कितना टाइम दे पाएंगे हम, तो हम नहीं देख पाते हैं सारे मेल्स को, सारे पिच डेक्स को. तो इन दैट केस एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो फॉलो अप करता रहे. वो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू डू. एंड though again the best entrepreneurs, so we are at the end of the session. So this is the quote that I really I follow it like anything, कि a real entrepreneur is not a visionary, but it's a great salesperson. आप जितना भी देख लो, Steve Jobs was a great salesperson.
इलॉन मस्क इज ए ग्रेट सेल्स पर्सन। तो जितने भी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनको बहुत अच्छा सेल्स पर्सन होना पड़ेगा। एज ए फाउंडर अगर आप सोचोगे कि आप एसी ऑफिस में बैठ के अपना स्टार्टअप चला लोगे, तो वो नहीं हो सकता है। 31st की नाइट को दीपेंद्र गोयल, जो जोमेटो का फाउंडर है, खुद डिलीवरी कर रहा था क्योंकि उनके पास राइडर्स की कमी हो गई थी। तो you need to be at that level. So I guess this was my entire session. So I think we can slide into the Q&As. Yeah, of course. So before we conclude our session, like let's take few questions. So with your permission, I would like to ask on the behalf of our one viewer. He wants to know what questions should I ask from my financial investor. Okay, Aman, I believe that when you are asking for financial investors, are they angel investors or VCs? Because you don't have much to ask when you are when you are going to get the investment. But in general, uh, what a what a founder should ask investors is that apart from money, what else they are bringing onto the table? Because it is not only money which is you are looking for. Because once you are सबने सार्क टैंक देखा है। सार्क टैंक में होता नहीं है कि सर हम इतना तो धंधा कर रहे हैं बट मुझे अमन सर ही चाहिए क्योंकि इनका मार्केटिंग में बहुत अच्छा हाथ है, इन्होंने B2C बिल्ड ब्रांड बिल्ड किया है। तो एंजल इन्वेस्टर्स में भी ऐसा ही होता है। वीसी में मैंने पहले ही बताया उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। तो सपोज आप वीसी के पास जा रहे हैं, सिकोया सर्च के पास जा रहे हैं, तो आप उनसे ये क्वेश्चन बोल सकते हो कि ठीक है आप पैसे तो दे रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट विल आर यू गोइंग टू हेल्प मी इनटू इंटरनेशनल एक्सपेंशन? आर यू गोइंग टू कनेक्ट मी विद द गवर्नमेंट? आर यू गोइंग टू हेल्प मी टू गेट लाइसेंसेस? ये सब ये सब आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट इज ऑल डिपेंड कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। कोई भी स्टार्टअप होता है, अपार्ट फ्रॉम फंड्स हमेशा 10-15 रिक्वायरमेंट्स तो उसकी हो ही सकती है। तो उसमें से 10-15 रिक्वायरमेंट्स आपको ये चेक करना है कि उसमें से 3-4 कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट है जो आप इन्वेस्टर से पूछ सकते हैं। और वो जो अगर आपको ये लग रहा है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टर से ये पूछना है कि इक्विटी कैसे डाइल्यूट होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कब वो एग्जिट लेंगे, ये सब आपको पूछने की जरूरत नहीं है। ये सारा टर्म शीट का पार्ट होता है। तो अगर ये क्वेश्चन था तो वो टर्म शीट का पार्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट you can ask apart from money what else you are going to bring to the table. So this is one question which I think every founder should ask to the investors. So, Aman, I hope you got your answer. And as we are running out of our time, we assure all the viewers who posted their question, we will send you the mail with the answer. And to conclude this session, I would like, first of all, I would like to thank Sivesh sir for giving his time to our viewers and giving such an experienceable and knowledgeable session to all of us. And they, as he said, networking is a very important part of getting investment and approaching investor. So I hope all the startups and the viewers who are watching us will take his tips and go to the investors as he suggested. So thank you so much, Sivesh sir, for coming and sharing your knowledge with us. Thank you, Lalita, and thank you, Meghna, for coordinating the event. Thank you. Yeah, Thank thank you, sir. thank you so much, sir.